हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में BCA थर्ड सेमेस्टर के स्टैटिस्टिक्स पेपर के सेक्शन ए को सॉल्व करेंगे। यह पेपर CCS यूनिवर्सिटी में ईयर 2022 में आया था। तो अब हम सेक्शन ए के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू डिफरेंशिएट पॉपुलेशन एंड सैंपल एंड एट्रीब्यूट एंड वेरिएबल। तो अब हम सबसे पहले पॉपुलेशन और सैंपल के बीच के डिफरेंसेस स्टडी करते हैं। पॉपुलेशन और सैंपल के बीच में डिफरेंसेस इस तरह से हैं। अब हम एट्रीब्यूट और वेरिएबल्स के बीच के डिफरेंसेस स्टडी करेंगे। एट्रीब्यूट और वेरिएबल के बीच के डिफरेंसेस इस प्रकार से हैं। In second question, we have to define harmonic mean and geometric mean. So first we are defining harmonic mean. Harmonic mean is equal to reciprocal of. Now suppose we have n observations and these n observations are, then harmonic mean is equal to, hence, और अब हम ज्योमेट्रिक मीन को डिफाइन करेंगे। ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस रेज्ड टू द पावर 1 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सपोज वी हैव n observations. Say observations are x1, x2, x3 up to xn. Then geometric mean is equal to. So the geometric mean can also be defined as nth root of the product of n observations. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को डिफाइन करना है और ये बताना है कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कब यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को डिफाइन करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज ए रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन. It is used to measure the variability of data around the mean value. Coefficient of variation is defined as. Now we will discuss where we use coefficient of variation. The coefficient of variation is a pure number which is independent of the units of measurement. So it is suitable for comparing the variability of two or more distributions, particularly when the data differ in their means or in the units of measurement. A large coefficient of variation means there is more variability in the distribution, and a smaller coefficient of variation means there is less variability in the distribution. In this question, we have to define random experiment, mutually exclusive events and independent events. तो सबसे पहले हम रैंडम एक्सपेरिमेंट को डिफाइन करते हैं। ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज एनी प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशंस इन विच द आउटकम्स कैन नॉट बी completely determined in advance. In other words, an experiment is called a random experiment if experiment conducted repeatedly under homogeneous conditions and it is not possible to tell or predict the outcome in advance. Now some examples are. Now we will define mutually exclusive events. In probability theory, two or more events are said to be mutually exclusive if they cannot occur at the same time, that is, simultaneous occurrence is not possible. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट से संबंधित कुछ एग्जाम्पल्स इस प्रकार से हैं।
अब हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स को डिफाइन करेंगे। Events are said to be independent of each other if the happening or non-happening of one event is not affected by the happening or non-happening of others. इंडिपेंडेंट इवेंट से संबंधित कुछ एग्जाम्पल्स इस प्रकार से हैं। Now we will discuss last question of this section. In this question we have to define process control and product control. तो सबसे पहले हम process control को define करते हैं। Process control is the first part of statistical quality control. Since a process is a series of operations that transforms input to output, but sometimes due to certain causes such as unskilled workforce, improper machines, poor quality of raw material, etc., the process is disturbed. In such situations, we require a technique through which we can control the process, and this technique is known as statistical process control or simply process control. Therefore, process control is a statistical technique in which the quality of a product is controlled while the products are in the process of production. In process control, the control charts are used to detect the variations and control the quality of a product. Now we will define product control. Product control is another method of statistical quality control in which the quality of a product is controlled when the product is ready to dispatch or sell to the customers. In other words, product control refers to the techniques and methods used to monitor and control the quality of the finished product or service. The goal of product control is to detect and correct defects in the product so that the product meets the established quality standards and consumer requirements. Product control use the technique of acceptance sampling to detect defects and control the quality of a product. व्यूअर्स, अगर आप किसी प्रॉब्लम या टॉपिक को डिस्कस करना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स या दिए गए लिंक पर शेयर कर सकते हैं।